Chalo, let us start with a new segment, that is degree of financial leverage. In bracket I am writing if preference dividend is given. तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दे रखा है, देन इन दैट केस हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द डीएफएल, और वो क्या बताता है, वो हमको दोनों चीज अभी लर्न करना है. एज पर एज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज कंसर्न, उस पर जैसे हमने डिस्कस किया दो सेगमेंट है. वन इज दैट से प्रेफरेंस डिविडेंड का इंफॉर्मेशन नहीं है, and the second is set the preference dividend information is there. The very first and the foremost thing that we understand is that degree of financial leverage is yet indicating the effect of the fixed financial charges. और यहाँ पे financial management में preference dividend is considered to be the fixed financial charges. Yes. देखो जब हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं ना, तो रेशियोज में वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशियोज दैट वी हैव. जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो है, टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है. ये जो सारे रेशियोज है ना, उसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल को पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड्स लिया जाता है, जबकि कैपिटल गियरिंग रेशियो में से प्रेफरेंशियल कैपिटल को बाहर वाला फंड्स माना जाता है. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर. यहाँ पे भी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं that so the preferential capital is considered as an outsider rather than say in house. ये यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है. इसलिए पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज कंसिडर्ड टू बी सिमिलर टू द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. तो सबसे पहला चीज जो हमको हमारे दिमाग में क्लियर करना है is that the payment of the preference dividend is considered to be the fixed financial charges. That is the first thing. दूसरा एकदम अच्छी तरह से समझो फ्रेंड्स. The second thing that we understand is this. For the purpose of making calculation of the DFL, हम लोग preference dividend को consider करेंगे, and importantly, the payment of the preference dividend is due after earning before taxes. That is the reason say we are required to understand that हम लोग जो EBIT और EBT का रिलेशनशिप पहले मेजर कर पाते थे, वो अभी हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे. I just give you some like explanation in writing that will give you more clarity. देखो, earning before interest and taxes less interest, earning before taxes less income tax, less preference dividend, that will give us earning available to equity shareholders, divided by number of equity shares, that will give us EPS. ये हमारा एक सिंपल फॉर्मेट होता है. Now we understand that so the payment of the preference dividend is falling due after earning before taxes. तो पहले हम लोग क्या कर सकते थे, EBIT और EBT और EPS दो रिलेशनशिप मेजर करते थे. बट सिंस द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज फॉलिंग ड्यू आफ्टर अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ ये एक रिलेशनशिप ही मेजर कर पाएंगे, ये दूसरा रिलेशनशिप मेजर नहीं कर पाएंगे. This is what's the kind of the new point that we have over here. जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दे रखा है, then in that case the degree of financial leverage will be able to measure what is the percentage change in EPS for every 1% change in EBIT. We will not be able to measure that say with the change in the operating income what would be the change in EBT. क्यों? क्योंकि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट जो है वो अर्निंग बिफोर टैक्सेस के बाद फॉलो होता है, सो दैट रिलेशनशिप वी विल नॉट बी एबल टू मेजर. चलो राइट ऑन हेडिंग DFL
In that write down, if preference dividend is given, in that write down first point, if preference dividend is given, comma, then it is considered to be a fixed financial charges, comma, for the purpose of DFL calculation. Full stop. Second point, importantly, it is considered to be a fixed financial charges like interest, in computation of DFL. Third point, in this situation, DFL measures that what is percentage change in earning before taxes and earning per share. I'm sorry. What is percentage change in earning per share for every 1% change in EBIT? Full stop. Relationship between EBIT and EBT cannot be measured using DFL in this case. Full stop. Fourth formula, in the from the basic information,
comma DFL is calculated using following formula. Write down the formula: earning before interest and taxes upon earning before taxes minus preference dividend divided by 1 minus t. This is a simple formula. With paragraph breakdown. Once DFL is found, comma, it measures following relationship. In the breakdown, DFL is percentage change in EPS upon percentage change in EBIT. Chalo, write down this formula. Chalo. Understanding the derivation of the formula only for understanding purpose. Never it is going to be there in examination. Chalo, let us have understanding of the derivation of the formula. The formula derivation is like this. देखो सबसे पहले हमको EPS का फॉर्मूला समझना पड़ेगा. EPS का फॉर्मूला कैसे होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, दैट इज EBT इंटू 1 माइनस T, यानी EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. तो ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by number of equity shares, that will give us EPS. So we understand it's the change in earning per share. Change in EPS क्या होगा friends? It is change in EBIT into 1 minus C, यानी उसको पोस्ट टैक्स किया हमने. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट तो सेम रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी सेम रहेगा, divided by number of equity shares. That will give us the change in EPS. So we understand that the percentage change in earning per share is equal to change in earning per share upon earning per share. What is the percentage change in EPS? It is the change in EPS upon EPS. Yeah, giving explanation of the change in earning per share. For example, EBIT is 1 lakh, for example. Amount of interest is, let us say, an amount of 25,000. So EBT is 75,000. Let us say that an income tax rate is 40%. So earning after taxes is 60%. That comes to 45,000. Preference dividend is 15,000. So earning available to equity shareholders 30,000. Number of equity shares are 30,000, so EPS is 1.
Now suppose EBIT increases to 1,10,000. Amount of interest is going to remain same 25,000. So this is 85,000. This is 51,000. This is 15,000. This is 36,000. This is 30,000. So this is 1.20. तो देखो लॉजिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, लेट्स से व्हाट इज द चेंज इन EBIT 10,000. सो चेंज इन EBIT 10,000. इंटरेस्ट में क्या चेंज है? 0. सो चेंज इन EBIT इटसेल्फ इज चेंज इन EBT 10,000. जो भी हमने 10,000 रुपए कमाए उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है. कितने का? 40% का. तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितना हो जाएगा? 6,000. तो देखो चेंज इन EBIT कितना है? 10,000. उसको पोस्ट टैक्स किया. नो चेंज इन द प्रेफरेंस डिविडेंड. So this itself is a change in the earning available to equity shareholders. Divided by number of equity shares कितने हैं? 10. That is 30,000. So this is 0.20. तो ये 0.20 को हम लोग कैसे कर सकते हैं बेटा? Change in EBIT. तो देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? Change in EBIT into 1 minus t divided by number of shares. Change कितना हुआ? 10,000 into 1 minus 0.40 divided by number of equity shares. कितने? 30,000. तो 6,000 divided by 30,000 that comes to 0.20. ऐसा करके हम ये 0.20 को वेरीफाई कर सकते हैं. Now let us come back to the derivation. So what is the change in EPS? Change in EPS is this. It is change in EBIT into 1 minus t divided by number of shares. तो ये क्या हो गया? Change in EPS हो गया. Whole divided by earning per share. अर्निंग पर शेयर कितना है फ्रेंड्स? अर्निंग पर शेयर ये रहा. दिस इज द अर्निंग पर शेयर. दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, यानी EBT into 1 minus t, EAT minus preference dividend, earning available to equity shareholders divided by number of equity shares. ऐसा करके फॉर्मूला आएगा. So now what happens at say the number of equity shares will be cancelled over here and the number of equity shares will be cancelled over here. तो हमारा DFL का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड्स? I'm sorry, हमारा परसेंटेज चेंज इन EPS क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन EPS, it is this much. Change in EBIT into 1 minus t, okay, that is the numerator, divided by EBIT minus interest, that is EBT, into 1 minus t, that is EAT minus preference dividend. So the numerator as it is रखा मैंने और डिवीजन में मैंने ये ले लिया, that is EBIT minus interest is EBT into 1 minus t minus preference dividend. Okay. Now percentage change in EPS is equal to, now be careful, देखो ये 1 minus t मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये 1 minus t मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन EBIT अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. देखो प्रेफरेंस डिविडेंड के मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसको डिवीजन लेना पड़ेगा.
किसका 1 माइनस टी का। So now percentage change in EPS upon I am doing EBIT is equal to change in EBIT upon I am doing EBIT into 1 upon EBT minus preference dividend divided by 1 minus tax rate। मैंने दोनों जगह पे डिवीजन में EBIT डाल दिया। नाउ दिस इज परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है ना, चेंज इन EBIT अपॉन EBIT। तो देखो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये EBIT को इस तरफ मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, सो इट इज EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। ऐसा करके फॉर्मूला आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द DFL, है ना। सो this is what we understand is the DFL. So DFL measures what is the percentage change in EPS for every 1% change in EPIT. And so this is the formula for DFL. This is what we understand is the DFL. ये DFL हो गया, ऐसा करके इसका डेरिवेशन है। Yeah, there is a query from a student that sir real life में इसको कैसे importance दिया जाता है। I would like to give that is say the priority to this query to explain. See friends, what happens at basically for any organization it is very important to decide कि बिजनेस का जो भी एक्सपेंसेस है उसमें फिक्स का प्रोपोर्शन कितना रखना चाहिए और वेरिएबल का कितना रखना चाहिए। वो डिसीजन मेकिंग के लिए ये जो चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं ना, वो हमको काम आता है। जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी हमको फाइनेंसिंग लेना है, इन दैट ऑल्सो व्हाट पोर्शन ऑफ द फाइनेंस शुड बी बाय वे ऑफ द ओन फाइनेंसिंग, हमारा खुद का पैसा, और कितना हमको बाहर से लेना चाहिए, वो प्रोपोर्शन हमको डिसाइड करना है। एंड फॉर दैट ऑल्सो से द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिवरेज इज हेल्पफुल टू अस। जैसे हमने डिस्कस किया कि ज्यादा फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस से क्या होगा कि जब आपका बिजनेस का स्केल बढ़ता है, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू हैव मोर इंक्रीज इन द प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम अगर आपका बिजनेस का स्केल डाउन जाता है, देन इन दैट केस से आपका प्रॉफिट ज्यादा रेट से गिरता है। सो बीइंग मैनेजमेंट, बीइंग लाइक द running the organization, you should be aware say of these kind of things, and it should be taken into account for the purpose of the decision making with respect to financing the capital structure, with respect to determination that say what portion of the expenses should be fixed and what portion should be variable. Next question. From following information you are required to calculate. The first is DFL. EBIT is likely to increase by 20%. Calculate a revised EPS. And so on the questions are there. I want you to tell me answer of the first question. So the first question is calculation of the DFL. चलो write an answer. DFL is found as EBIT
upon EBT minus preference dividend divided by 1 minus T. This is the formula. The EBIT value is 6 lakhs, EBT value is 4 lakhs. This is 6 lakhs. This is 4 lakhs. Minus the amount of the preference dividend is 60,000 and income tax rate is 40%. So 60,000 divided by 1 minus 0.40. Six lakhs upon 4 lakhs minus 60,000 divided by 0.6, that is 1 lakh. So 6 upon 3, that comes to 2. That is the way the DFL is found too. Second part of the question, if EBIT is likely to increase by 20%, calculate the revised EPS. Answer for the second question, calculation of revised earning per share. In that, method number 1, in that working note number 1, calculation of percentage change in EPS. DFL indicates what is the percentage change in EPS for every 1% change in EBIT. So percentage change in EPS is equal to DFL into percentage change in EBIT. DFL is 2 into this is 20%. So 2 into 20%, that comes to 40%. Working note number 2. Calculation of revised earning per share. Current earning per share plus change in earning per share. The current earning per share is 18. ₹18 plus 40%. That comes to 25.20. This is the way we can make the calculation of the EPS. Method number 2. This answer we can do with an alternative method. In that, EBIT. Right now the EBIT is 6 lakhs. It is going to increase by 20%. Six lakhs plus 20%. That comes to 7,20,000. Less interest. Interest is 2 lakhs. Earning before taxes.
5,20,000. Earning after taxes 3,12,000. Preference dividend 60,000. Earning available to equity shareholders 2,52,000. Number of equity shares 10,000. EPS is 25.2. Third question. Calculate interest coverage ratio. Interest coverage ratio. It is EBIT upon interest. The amount of the EBIT is 6 lakhs and interest is 2 lakhs. We already have discussed it. It is indicating the ability of the company to make payment of interest. That is 3 times in our example. Fourth, if EBIT is likely to decrease by 5%, calculate revised EPS. So there is a reduction. In the rundown, working note number 1. Calculation of percentage change in EPS. DFL is equal to percentage change in EPS upon percentage change in EBIT. Percentage change in EPS is equal to DFL into percentage change in EBIT. So there is a reduction by 5%. So there is a reduction by 10%. Working note number 2. Calculation of revised earning per share. It is current earning per share minus the reduction in earning per share. Presently the earning per share is 18 minus 10%. That comes to 16.2. That is where the revised EPS can be found. Method number 2. Let us understand second method में क्या किया जाएगा. EBIT अभी का कितना है 6 lakhs. उसमें कितना रिडक्शन है 5% का. So 6 lakhs minus 5%, 5,70,000. Less interest. Amount of interest is 2 lakhs.
Earning before taxes 3,70,000. Income tax rate is 40%. So EAT is 60%. So 2,22,000. Preference dividend 60,000. Earning available to equity shareholders 162. Number of equity shares 10,000. EPS is 16. ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं. Either of the method you can do.